Hello everyone, welcome to today's discussion, that is chapter number 5 of class 12 biology, that is molecular basis of inheritance. Today is the last session of this chapter. So last chapter hame exam padutile, last chapter hame padutile lack of का सरितला हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कोन में स्टार्ट कर दिते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हमें स्टार्ट कर दिते तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कोन को दी स्टार्टिंग रे हम खाली थोड़े रीडिंग मार के जेतले ताने मोनिटर मो ठीक से बुझो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन द प्रेजेंट सेक्शन में लर्न जे एटी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लिखा है जे मो लास्ट सेशन में तुम मानको कहथि जे साइंटिस्ट माने कोन करथिले ना ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करिया पई तमे कोन करले ना गोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर जे कहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ताको लक्ष्य थिले जे पूरा ह्यूमन रो पूरा जीन सीक्वेंस को से माने माने नोट करके रखे माने ह्यूमन पूरा जीन सीक्वेंस को से माने सेव करके रखबे जे फर्दर यूज पाए जे के कोवडे डिजीज को ठीक करिया थिबो कोवडे याको क्राइम मेले जो दीटा जगह सस्पेक्ट ये वित जाने पे तो समय को करते ना पूरा ह्यूमन बॉडी को बुझिया पाए समय को करते ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते 1990 से केबे स्टार्ट करते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट केबे स्टार्ट हेतला सीक्वेंसिंग ना 1990 स्टार्ट हेतला ताबे कोन ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट व्हाट कॉल्ड मेगा इवेंट को कहते ना गोटे मेगा इवेंट कहतला तब ताने केमती मेगा इवेंट कहतला ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कोन थे अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर था और जदि प्रति सीक्वेंस में जदि $3 US डॉलर खर्च हो पर बेस पेयर ताने टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट केते हो 9 बिलियन US डॉलर तो 9 बिलियन US डॉलर माने एते बड़ा गोटे प्रोजेक्ट ला सेट पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोली कह जाय further if often sequences were to be stored in the type form in books if each page of the book contained 1,000 letters each book contained 1,000 pages then 3,300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell जे कोन कहले जति के हम जो डाटा आसी सब जीन सीक्वेंस रो जति हम ताको टाइप फॉर्म रे गोटे बुक रे स्टोर करिया जोतरे सब पेज 100 टा लेटर थियो आउ सब बुक रे 1000 टा पेज थियो तने एंट्री हमको 3300 टा बुक लागि जीवो सब इनसे मन रखिया पाए सब इनसे नोट डाउन करी रखिया पाए so the enormous amount of data expected to be generated also necessitated the high use of high speed computational device for data storage and retrieval and analysis. Human Genome Project was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics. तो सही जो एते नंबर ऑफ डाटा को स्टोर करिया पे समान जो नुआ एरिया ऑफ बायोलॉजी डेवलप हेतला ता कोन कहले ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स एमबी तो मैं आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेनली कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को लेके सेठी कोन ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजिकल फेनोमेनन बायोलॉजिकल थिंग को कंप्यूटेशनल डिवाइस से स्टोर कर रखा कोन कहला ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स एटा बायोलॉजी रो ओडा नुआ एरिया भाबे नुआ ब्रांच भाबे एस्टैब्लिश कला ताबे कोन ना गोल्स ऑफ एचजीपी तो साइंटिस्ट माने गोल कोन रखतले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करिया जो 9 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर खर्च करिया गोले तो ना गोल कोन थला देखिए कोन मतलब आइडेंटिफाई all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA, determine the sequence of 3 billion chemical base pairs that make up human DNA, store this information in the database, improve tools for data analysis, transfer related technologies to other sectors such as industries, address the ethical, legal, social issues that may arise from the product. So, human genome project goal कौन थला ना जो 20,000 25,000 ह्यूमन जीन्स अछि ह्यूमन डीएनए रे ताको सब आइडेंटिफाई करिवा DNA रो जो 3 बिलियन बेस पेयर अछि सबुडा को सीक्वेंसिंग करिवा और से इंफॉर्मेशन कोन नै सीक्वेंसिंग रो इंफॉर्मेशन को डेटाबेस रे स्टोर करि रखिवा ताबे सेही डाटा रे एनालिसिस पे टूल्स इंप्रूव करिवा आ कोन ना ए जो टेक ए या रिलेटेड जो सब जिंस अलगा अलगा सेक्टर को जो ट्रांसफर करिवा तो सेटा को माने इंडस्ट्री जो कोटे गोटे इंसुलिन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन गोटे फार्मास्यूटिकल कंपनी इंसुलिन बनाउछ तो ताको हम जदि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सब सीक्वेंसिंग आले तने को जीन ने इंसुलिन फॉर्मेशन होछ को जीन ता इंसुलिन फॉर्मेशन पे दायी रहउछ तो सेटा कोन करा सही रिलेटेड टेक्नोलॉजी टाको कोन करा ना से इंडस्ट्री को ट्रांसफर करियो आ कोन ना एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट तो सब बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट रे गोटे एथिकल सोशल और लीगल इश्यूज थाए तो ता विषय रे से माने कोन कोन तबे एड्रेस करिया पई चेष्टा करथि तो एटा तले गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तापर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए 13 ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तांडे के करथि ने यूएस डिपार्टमेंट एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वेलकम ट्रस्ट यूके बिकेम ए मेजर
partner additional contributors kiye thile Japan, France, Germany, China and others were the additional contributors to this. The project was completed in 2003. Project was completed in 2003, exactly 13 years. The knowledge about effects of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat, and someday prevent the thousands of disorders that may affect human beings. So, मैं ये कहते कोई आसी human DNA sequence जानवर जो knowledge टा कोते काम आसियो the effects of DNA variation among individual जेटा कि हमको कौन हेल्प करियो ना diagnosis, treatment, out prevention ପାଇଁ ମାନେ prophylaxis of thousands of different disorders in human beings. तारे human मान करे तू ऐसे thousands of disease होची तार diagnosis, treatment और prevention रे help करियो कौन ना human जो ना project gene DNA sequence जाने वाला हमको इस सब रे help करियो. Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms DNA sequence can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied toward solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, and environmental remediation. तो खाली ह्यूमन रो DNA sequence जाने के लिए तो non-human organism रो भी DNA sequence जाने ले हमरा कौन हेल्प होबो ना ताकू ने के हमें कौन करबे ना जो डिफरेंट चैलेंजेस अछि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन ए सब रे हेल्प करियो मा तो गोटा तर इकोलाई बैक्टीरिया ताकू हेल्थ केयर यूज केमती ना तर जो पीसीटी करियो ना पीसीटी में वेक्टर ने के ट्रांसपोर्ट करिवारी एक्सपेरिमेंट करियो यूज हुए तो तार जे डीएनए सीक्वेंस हम जानबे ताने कोन होबो हमको जाना पड़ो जी कोड तार कोड प्लाज्मिड रे कोन भर्ती करियो को वेक्टर अता कोड तार रेस्ट्रिक्शन साइट अछि तो एवडा सब सीक्वेंसिंग गला हमको बेसी डिटेल तो जाना पड़िबो कोदरे एग्रीकल्चर जेमते ढेरुडा को जेमते हमरो राइस रो ढेरुडा को वैरायटी तिला तो एक डीएनए सीक्वेंस जाला हम तर डीएनए सीक्वेंस को चेंज करके तो डिफरेंट वैरायटी रो बेटर वर्जन ऑफ राइस एंड बियर तो एग्रीकल्चर एनर्जी प्रोडक्शन भी से बड़े एनवायरमेंटल रेमेडिएशन तो एई सब एई चार्टर को ना हेल्प तने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स ऊपर एक्सपेरिमेंट करले हमरा को चार्टर फील्ड रे हमरा हेल्प होबो ना हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन ये एटा एग्जाम रे आसे many non-human model of organisms such as bacteria non-human organism na bacteria yeast तने के तने bacteria yeast Caenorhabditis elegans a free living non-pathogenic nematode तने elegans कौन C elegans कौन ना a free living non-pathogenic nematode Drosophila the fruit by जानते TH Morgan रो plants रे कौन ना rice और Arabidopsis etc happens तो अपने को non-human model रो sequencing है the bacteria yeast Caenorhabditis elegans C elegans a free living non-pathogenic nematode C elegans टा कौन ना ଗୋଟେ free living non-pathogenic nematode the free living भी और non-pathogenic भी एड़ा सब मन रखो C elegans कौन एग्जाम में डायरेक्ट आसे C elegans टा कौन तुम कौन लिखो मैं free living non-pathogenic nematode और Drosophila कौन ना fruit fly plant रे कौन अछि ना rice और Arabidopsis एमान के भीतर सीक्वेंस है तने कौन कहले नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म रे सीक्वेंस कोला हमरा कौन के लाभ होबो ना फर्स्ट towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, and environmental remediation. और तने कहाँ के ऊपर कहला ना बैक्टीरिया, yeast, C. elegans, Drosophila, rice, and Arabidopsis. यहाँ के ऊपर सब सीक्वेंसिंग कराइला. तने मेथोडोलॉजी तने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो जो सीक्वेंसिंग करिवा जीन रो तने मेथड्स कोन तने मेनली दीटा मेथड थिला मैंने दीटा अप्रोचेस थिला द मेथड्स इंक्लूड टू मेजर अप्रोचेस one approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNA that is express sequence text by EST तने कौन लिखला तने आरटा भी पढ़ता the other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all coding and non-coding sequence later assigning different regions in the sequence with function that is called sequence annotation then कौन बोला ना semana methodology रे हम दीटा हम मेथड यूज करले दीटा मेथड यूज करले जीन को सीक्वेंसिंग मारे पे फास्ट ले कौन ना express sequence type EST कौन थला ना only identifying those genes that are expressing as RNA माने जीन रो खाली जो पार्ट उडा RNA रे एक्सप्रेस होची अरे से उडा को सीक्वेंस करिया को कोन कहला ना एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग माने एक्सॉन एडी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रे कोन कराइला बस एक्सॉन्स को मानो सीक्वेंस कराइला एक्सॉन्स को तापर कोन आसिला आउट थिला कोन ना ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम that contain all non-coding and coding sequence
and letter S depend होते हैं तो कौन है sequence annotation and second method कौन था sequence annotation था तो कौन था ना both coding and non coding माने exams और intros पूरा DNA sequence base पे उड़ा को जेमिति sequence रे अछि कहा को भी नोट है कि सब गोटे गोटे करी कि sequencing जो डाटा को माने सेव करी रखले सेटा कोन कहला ना sequence annotation कहला एथमे ताको blind approach कहला काहे सेतरे बहुत कोडिंग और नॉन कोडिंग को भी कराउला काहे इंटर्न मान करता हम किछ काम बने इंटर्न तो आरएनए रे किछ फॉर्मेशन करे आरएनए फॉर्मेशन रे टाइप में इंटर्न बस एग्जाम रहता है रेडी दी गदला फास्ट जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जेडा कि खाली एग्जाम मान को नेकी आ कोन ना सीक्वेंस एडिशन बहुत एग्जाम और इंटर्स को नेकी एडा एग्जाम में सब बड़ा আছে for sequencing the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes तर सीक्वेंसिंग में कौन करा जाए गोटे डीएनए को निया जाए तापर ताको आइसोलेट करा जाए डीएनए को तापर ताको रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस देके ताको छोटे छोटे फ्रैगमेंट कन्वर्ट करा जाए माने डीएनए गोटे बहुत लॉन्ग पॉलीमर और ताको सब एते बड़ लॉन्ग पॉलीमर को एका संगे सीक्वेंसिंग करारे बहुत डिफिकल्ट हो and cloned in a suitable host during using specialized vectors ताने कौन कराला डीएनए कौन कहला फर्स्ट एक्सट्रैक्ट को आइसोलेट कराला तापर ताको रैंडम फ्रैगमेंट्स को कन्वर्ट कराला यूजिंग रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस बाय अंडर न्यूक्लियस तापर कौन करा जिवो ताको क्लोन करके सुटेबल होस्ट मध्ये रे वेक्टर यूज करके पका जिवो the clone resulted into amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with these the commonly used host bacteria and yeast the commonly used host कौन ना bacteria and commonly used host है bacteria or yeast. The vectors were called BSC bacterial artificial chromosome और YAC yeast artificial chromosome. Vector कौन थला ना bacterial artificial chromosome और कौन थला yeast कौन थला ना yeast artificial chromosome. तने दितला कौन ना हमें जो DNA माने DNA sequencing करिया को जीवा पर DNA तो गोटे बहुत लॉन्ग पॉलीमर DNA तो गोटे बहुत लॉन्ग पॉलीमर ताको तो एका संगे टेक्निकल लिमिटेशन आस जीवा ताको एका संगे सीक्वेंसिंग करिया को ताकि में कौन कहला फर्स्ट डीएनए को आइसोलेट कराला ताको रैंडम फ्रैगमेंट्स से एंडोन्यूक्लियस देके छोटे छोटे स्मॉलर साइज को कराला तमे सेही स्मॉलर साइज को कराला देखो क्लोन कराला सुटेबल होस्ट रे यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर तो होस्ट केतले ना होस्ट तिले हमर बैक्टीरिया और यीस्ट और वेक्टर्स केतले ना बीएससी और वाईएससी बीएससी कोन ना बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तो ये तिले दिले जाको वेक्टर the fragments were sequenced using automated DNA sequences that worked on the principle of a method developed by Frederick Sander. Then जो fragments उड़ा नियाला ताको sequencing केमते कराला ना using sequence केमते कराला using automated DNA sequences that worked on the principle of method developed by Frederick Sander. तने जो Frederick Sander वोटे method of principle develop करले ताको use करी कौन कराला ना automated DNA sequence ना कौन sequencing fragments को sequencing कराला Other Frederick Sanger कौन करले is also credited for developing methods for determination of amino acid sequence in proteins. तने से Frederick Sanger तो जीवन से वो sequencing method discovery करते ते amino acid sequencing पे method देते अब एटी कौन से एटी DNA sequencing पे भी method दमर follow हितला. These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. ये sequence कौन करला तम arrange करला तांकर जो overlapping ताको नहीं के ताको कौन कराने arrange कराला. This required generation of overlapping fragments for sequencing. Alignment of this sequence was not humanly possible. Therefore, specialized computer-based programs were developed. These sequences were subsequently annotated and assigned to each chromosomes. The sequence of chromosome was completed only in May 2006. ताने क्रोमोसोम वाला सीक्वेंस केबे सरला ना मे 2006 रे सरला जेंते ह्यूमन जनरेशन 2003 रे सरला किंतु सीक्वेंस सरते chromosome 1 May 2006 ayala. This was the last of the 24 human chromosome that is 22 plus XY to be sequenced. ताने chromosome 1 को सब तो लास्ट रे सीक्वेंसिंग करा जाइथिला तो लास्ट सीक्वेंसिंग करा जाइथिला तर से केबे सरला ना मार्च ना May 2006 रे सरला. Another challenging task was assigning the genetic code and genetic and physical maps on the genome. This was generated using information on the polymorphism of restriction and endonuclease recognition site and some repetitive DNA sequence known as microsatellites. One of the applications of polymorphism in repetitive DNA sequence shall be explained in next section of DNA. Microsatellite विषय में DNA printing रे पढ़िबा. Then another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome. Then जो genomes ना हमें DNA को गोटा पर गोटा
पढ़ले तन ताको बट को जगह को जीन को जगह को फिजिकल ये रोचे सेटा को उठे असाइन करडा गोटे चैलेंज टास्क थिला. This was generated using information on the polymorphism, structure, and the nucleus recognition site, and some repeated DNA sequence or microsatellite. Microsatellites or structure and the nucleus recognition site रे help में सेटा कौन कराला ना सेटा को annotation कराला सेटा को कौन कराला ना assign कराला. तान एबे कौन देखिबा तार जे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सरीला तान एबे पढिया कोन ना साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम कर देले सक्सेसफुली हम ह्यूमन रो पूरा बेसिक सीक्वेंस जानले तान ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 वर्ष रो एक्सपेरिमेंट करे एबे आसी कोन ना सेमान कोन मिलला ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर तो आमे सेते केते पढतले ना 3.3 बिलियन बेस पेयर 3 बिलियन बेस पेयर एमती पढतले तो एग्जैक्टली नंबर कहते एग्जैक्टली नंबर होची 3164.7 मिलियन बेस पेयर बा 3.16 बिलियन बेस पेयर तमे किसी पूरे नंबर टा एग्जैक्टली मन रखिबो जे 3164.7 मिलियन बेस पेयर the average gene consists of 3000 base but size is very greatly with largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases तो कहला ना एवरेज जीन कते करे ना 3000 जीन 3000 बेस पे कंटेंट करता है बट एवरेज जीन 3000 बेस पे बेस कंटेंट करता है बट लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन का ना डिस्ट्रोफिन कते कंटेंट करे ना 2.4 मिलियन बेस कंटेंट करे डिस्ट्रोफिन टा माने डिस्ट्रोफिन प्रोटीन परस करे सेटा मेले हम मसल से हम मसल दा गोटे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेटा वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जेटा तार न है मस्कुलर डिस्ट्रोफी वे डिजीज वे माइटोनिक डिस्ट्रोफिन जीन जदी ठीक से फॉर्मेशन ना होला डिस्ट्रोफिन मॉल प्रोटीन जदी जस्ट डिग्रेडेशन ही होला then our daily disease वे the total number of genes is estimated at 30,000 much lower than previous estimate of 80,000 to 1,40,000 gene first तर gene total number of gene कितने मिलला हमको ना 30,000 gene मिलला that much less than 8,000 to 1,40,000 gene जब से previously estimate करते थे इतना बड़ा gene थी वो almost all 99.9% nuclear bases are exactly same in all the people तारे कौन वाला ना 99.9% बेस सब लोगों में सेम है 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस एग्जैक्टली सेम है सब लोगों में तारे से 0.1% डिफरेंस रही एतोडा को लोकवा को अछि दुनिया रे द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन ताने अननोन केतरा अछि फंक्शन ना ओवर 50% discovered gene over 50% of discovered gene the function करना unknown अछि less than 2% of the gene codes for protein less than 2% of the gene codes for protein then बाकी 98 non coding genome codes for protein then बाकी 98% of non coding repeated sequence make up very large portion of human genome cell mo jo non coding part ta कहले सेटा होची repeated sequences सेटा है very large portion of human genome content करे nearly 98% है ना যদি 2% खाली कोड कला प्रोटीन बाई तन बाकी 98% यूजलेस तो सेटा तला कोन ना नॉन कोडिंग सीक्वेंस और सेटा कर देला ना रिपीटेड सीक्वेंस तो सेटा ईएसटी के कोन करतले ईएसटी साइंटिस्ट में करतले बस 2% रे हम सीक्वेंसिंग कर देबा बट सीक्वेंस एनोटेशन वाले साइंटिस्ट में कहले ना ना हम जो फर्स्ट टाइम पे थोड़े करछे लाइफ रे तनडा कोन करतले पूरा को 100% ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करिए अगर ज्योति रिपीटेड सीक्वेंस बा ते नॉन कोडिंग पार्ट भी बहुत किछि इंपोर्टेंस थिबो सीक्वेंस एनोटेशन मेथोडोलॉजी को हम फॉलो करिया अब पूरा ह्यूमन जीनोम का हम करिया सीक्वेंसिंग करिया repetitive sequences are stretches of DNA sequence that are repeated many times sometimes 100 to 1000 times they are thought to have no direct coding functions but they shed light on chromosome structure dynamics and evolution कारण कौन करला ना repetitive sequence करते हैं ना DNA sequence जेटा कि repeat हेते 100 to 1000 times तार किछि no direct coding function होता समय किछि coding करनते नहीं बट समय गोटे आइडिया दियंती कहार हमर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्रोमोसोम डायनामिक्स आ हमर इवोल्यूशन पैटर्न ऊपर तो इवोल्यूशन पैटर्न ऊपर समय कोन दियंते ना गोटे आइडिया दे जे हमर इवोल्यूशन केमति अछि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ताले केमति रहबो डायनामिक्स तो से विषय कोन कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस कोन हेल्प करते क्रोमोसोम 1 है जो मोस्ट जीन क्रोमोसोम 1 है जो मोस्ट जीन सेगमेंट सब लास्ट खत्म हेतला 2968 और y है द fewest that is 231 तो y क्रोमोसोम में सब कम था 231 क्रोमोसोम और क्रोमोसोम 1 कितना है ना 2960 में 2968 जीन्स था जीन्स सॉरी क्रोमोसोम को जीन्स
296 genes ଥାଏ chromosome 1 ରେ ଆଉ 231 genes ଥାଏ chromosome Y ରେ. Scientists have identified about 1.4 million locations with single base DNA differences, that is SNPs, single nucleotide polymorphisms, SNPs, occurs in human. This information promises to revolutionize the process of finding chromosome location for disease associated with sequencing and tracing human history. तो कौन कर लो साइंटिस्ट में आइडेंटिफाई कौन कर ना 1.4 मिलियन लोकेशन जोठी खाली गोटे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस रही माने सबुड़ा सेम थी बट गोटे डीएनए बेस सेम अलग थी जेटा कौन कर ना एसएनपीस को आला जे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बस निप्स को आला एसएनपीस occur in human एटा कौन हेल्प करे ना हमको डीजे एटा कौन करे ना हेल्प इन रिवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज सीक्वेंसेस इन ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री तो ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री माने क्राइम सीन रो जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करिया तो सप्ताह रे हम हेल्प करे आउ कोन करे ना डिजीज एसोसिएटेड विथ सीक्वेंसेस माने सीक्वेंसिंग रिलेटेड जो डिजीज कोटी जो पॉइंट म्यूटेशन फ्रेंडशिप म्यूटेशन तो ता ऊपर कोन करे ना फाइंड करियर हमको इजी करे जेमते सिंगल बेस डिफरेंस जेमते एग्जांपल दे मुकार आ सिकल सेल एनीमिया ताने सिकल सेल एनीमिया कोन एचपीएल जीन ने कोन था नॉर्मल जेटा थे तो केवल गुटे जगह चेंज हो जाए तब सेटा कोन हो जाए सिकल सेल एनीमिया जे पूरा गोटे बेस पेयर रो चेंज हो तो सेटा को आला सेटा को गोटे एग्जांपल कोन ना एसएमपी रो एसएमपी एग्जांपल होबनी गोटे यूज हो एसएमपी कोन पे यूज हो ना कोन पे जो फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस तो एटा सेटा कोन ना साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम साइलेंट फीचर ह्यूमन जीनोम कौन था ना ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन बेस पेयर था और एवरेज जीन कंसिस्ट कर 3000 जीन्स और 3000 बेस पेयर एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर था हाईएस्ट में डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेस अछि 3000 बेस पेयर 3000 बेस और डिस्ट्रोफिन को ना 2.4 मिलियन बेस और टोटल नंबर ऑफ जीन्स का था 30000 99% 99.9% डीएनए सीक्वेंस सब लोगों समान था अब 50% रो अधिका जीन्स हम फंक्शन जानने लेस देन 2% जेनेटिक कोड्स था प्रोटीन पाई 95% किछि करन दिले समान रिपीटेटिव सीक्वेंस पर हेल्प यूज को ना क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनामिक्स और एवोल्यूशन पर आईडिया दिए क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन्स अछि और वाई रे 231 जीन्स अछि तापर साइंटिस्ट ने कोना साइंटिस्ट माने 1.4 मिलियन लोकेशन ऑफ एसएनपी डिस्कवर कले उनके हम हेल्प करे ह्यूमन ट्रेसिंग ऑफ ह्यूमन आउटकम ना डिजीज एसोसिएटेड विथ सीक्वेंसिंग जाने ପାଇଁ हेल्प करे तो एटा तला कोन ना साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम तो कोन तला ना साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम तापर कोन करिया ना एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस तो जे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम कर देला तार एप्लीकेशन कोन रहबो तार अबाउट तार फ्यूचर चैलेंजेस कोन रहबो तार deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define research for the coming decades leading to our understanding of biological system. This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both the public and private sectors worldwide. One of the greatest impacts of having human genome sequence may well be enabling a radically new approach to biological research. In the past, researchers studied one or a few genes at a time with whole genome sequences and new high throughput technologies. We can approach sequencing systematically and on a much broader scale. They can study all the genes in a gene, all the genes in a genome. For example, all the transcripts in a particular tissue or organ or tumor, or how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected networks to orchestrate the chemistry of life. तो ठीक है लगले ना हमें डीएनए ना ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट हम कौन कौन हेल्प ले सेठी मेनली कौन देखेले ना हमको कौन मिला ना हमको ढेर नॉलेज मिला हमको इजी हे गला ना सब जीन्स और प्रोटीन मान जीन भीतर केमते काम कर जदी परस्पर को हेल्प करके केमते रेगुलेट होजी गोटे पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म को जीन द्वारा रेगुलेट होजी ताका भीतर रिलेशनशिप कोन तो सेडा सब जानिबार हम हेल्प ले पहुंचले ना ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट करिया ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट जो एथरा हम हेल्प करे तो एटा तो एते कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एते आसे बट एटा होजी तार कोन ना खत्म कला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ए paragraph तापर हम स्टार्ट कोन करिया ना डीएनए फिंगरप्रिंट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ओटा मोस्ट इंपोर्टेंट यूज करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग I started in the preceding section 99.9% of base sequence among humans is the same and it is these differences in sequence of DNA which make every individual unique in their
phenotypic appearance 99.9% যদি সেম रहला then 0.1% अलगा रहला तो 0.1% माने केते 1 by 1000 तर 3 into 10 to the power 9 base pair अछि माने 3 into 10 to the power 6 base pair ही अलगा अछि हमर तो से वजह से लगी if one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population sequencing the DNA every time would be daunting and expensive. Thus, imagine trying to compare two sets of 3 into 10 to the 6 base pairs. DNA fingerprint is a very quick way to compare the DNA sequence of any two individuals. तो से सही কথা लिखला जदि हमको दीटा इंडिविजुअल्स बा गोटे पॉपुलेशन भितर डीएनए डिफरेंस को हमको जदि स्टडी करिया को अछि तो सब बेले गोटे 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर 3 मिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करके ताको डिफरेंस को चेक करिया दीटा जाका सेट बहुत टाइम टेकिंग तो ता जाय कोन असले ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग असला जो तरे काम को हेल्प पाए वो जल्दी करिया तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोन देखियो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेड डीएनए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोन कहले ना आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए तो आइडेंटिफाई तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस रे किसी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रो टेक्निक को आजो because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. ताने a repeated sequence को केमती होगा करा जाए ना bulk genomic project रो as a different peak during density gradient centrifugation. Density gradient centrifugation करके ताको को हमको आज repeated DNA को bulk DNA रो अलग कर दे. Density gradient centrifugation हम कहाँ को नहीं करते वो तो तमों मन अच्छे के नहीं सीजेम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक ततरे हमर चेंज होतला तो सेम डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक करके तरे एमिति आसीबो तरे एमिति करके ए गुला सीक्वेंस को डिफरेंट पीक रे कोन करा जिवो ताको सेपरेट करा जिवो ते तो कोन करा जिवो ना सेपरेट करा जिवो द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए तने बल्क डीएनए कोन करिवो ना मेजर पीक बनेबो और अदर स्मॉल पीक्स के बनेबो ना सैटेलाइट डीएनए बनेबो and bulk DNA तो समस्त सम 99.9% DNA टा कोन कहला ना समस्त सेम रहता को bulk DNA कहला तो सेटा कोन करिवो ना से जो ग्रेडियंट रे तो बेसिक पीक बने कोन ना कोन मेजर पीक बने bulk DNA और स्मॉल पीक के बने ना सैटेलाइट DNA जो हम जो साइंटिफिक करिवो कला पर हम टेस्ट ब्रास एटा उटा आसला bulk DNA जो तळे रहला तर डेंसिटी और सैटेलाइट DNA ऊपर रहला तर डेंसिटी कम तो ए बळे होली ताको पुणे तर ग्रेडियंट कले तरफ शेप पीक ग्राफ रे ये कले द पीक आसियो डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन एट रिच और जिस रिच length of segment and number of repetitive units the structural DNA is classified into many categories तने एटी कहा का को नहीं के ना एटी बेस कंपोजिशन जेटा की एटी रिच जिस रिच लेंथ ऑफ द सेगमेंट और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स को लेके सॉफ्टवेयर डीएनए को मैंने कैटेगरी से कराई छी एग्जांपल कौन ना माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट then these sequences normally do not code for any proteins but they form a large portion of human genome जे तो हमें कहते जे only 2% protein को कोड करते बाकी 98% किछि करते नहीं किछि protein कोड करते नहीं खाली large portion of human genome को बने थांती this sequence saw high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting इसमें कोन high degree of polymorphism थाई और basis of DNA fingerprinting polymorphism माने अलग morphology शो करिया माने आमे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रा हम यूज करबे होछि दीटा जाक लोकन को डिफरेंट करिया पाए तो एई उडा को एई सीक्वेंस को काहे नि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करिया पाए त दीटा डिफरेंट इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करिया पाए काहे ना एई डीएनए सीक्वेंस कोन पाए एई डीएनए सीक्वेंस उडा को हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे माने डिफरेंट इंडिविजुअल एट किछि जगह डिफरेंट बेसेस ताई बेस पेयर ताई जेटा की दीटा इंडिविजुअल्स को सेपरेट बोले देखाई थाए तो सेट में कोन करला तने एई सीक्वेंस को निया गला जेतरे की कोन करा जाय ना हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू from an individual show the same degree of polymorphism they become very useful identification tool in forensic application further as the polymorphism are inheritable from parents to children DNA fingerprinting is the basis of paternity test in case of dispute तो से कोन कहला ना डीएनए सब टिश्यू रो डीएनए कोन ना तार सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते डीएनए सब हम बॉडी रे जो टिश्यू जो सेल रो भी डीएनए भी आनिबा तार सब सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे इसमें एटा यूजफुल है जे
आइडेंटिफिकेशन पाई केडा फोरेंसिक माने कोन तमे जानती हो फोरेंसिक मेडिसिन माने गोटे कोठी क्राइम सीन हेची या डेथ हेची तापर से जो डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम करंती सेटा कोनती फोरेंसिक मेडिसिन बा फोरेंसिक साइंस कोनते तो से जे कोन होता है ना हेल्प करबो ना आइडेंटिफिकेशन टूल पे हेल्प करे ना फोरेंसिक एप्लीकेशन ना तार डीएनए को नेके देखिबे जे एडा नेचुरल डेथ हेची ना ए जो डीएनए ए जो टिश्यू सैंपल में जेटा को क्रिमिनल रो जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल रो डीएनए को नेके समान मैच करबे जहा पड़ले एटा होच क्रिमिनल तो सेटा होच कोन ना फोरेंसिक एप्लीकेशन यूज है आ कोथे तारे ना कोन पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल पॉलीमॉर्फिज्म होची इनहेरिटेबल एटा तमे मन रखिबो एटा मो आउट हाइलाइटर मारे पॉलीमॉर्फिज्म कोन ना इनहेरिटेबल from parents to children. I wrote an important line. The polymorphism is inheritable. DNA fingerprinting is the basis of paternity test in case of dispute. तो सही थे पाई DNA fingerprinting को कौन करा जाए ना basis करा जाए paternity test रो जे ये ताका parents की नहीं ये पिलाटा एक couples रो एक parent रो एक पिलाटा की नहीं सेटा को कौन करा जाए तो paternity test करा जाए तो DNA fingerprinting देखिए वे कौन पे ताको DNA fingerprinting कौन है जे and polymorphism टा कौन ना इनहेरिटेबल जो रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस जो polymorphism शो करे बा सैटेलाइट डीएनए जो polymorphism शो करे सेटा कौन ना सेटा इनहेरिटेबल सेट पे DNA fingerprinting is the basis of paternity test in case of disputes as polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting it is essential to understand what DNA polymorphism means in simple terms तो polymorphism टा कौन ना genetic mapping और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रो बेसिस तर एडा मन के एडा बेसिक बात मन के जो बेसिक लेक्चर में वो इंपोर्टेंट वर्ड तो पॉलीमॉर्फिज्म और डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द पॉलीमॉर्फिज्म कौन ना पॉलीमॉर्फिज्म माने वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल recall the chapter 4 में पढ़ते था विषय रे New mutations may arise in an individual either in somatic cell or in germ cell. The new mutation both arise होगा ना somatic cell रे होगा ना germ cell रे होगा. There is a generate gametes in sexually producing organism. If a germ cell mutation does not seriously impair individuals ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to other member of the population through sexual reproduction. तो यदि germ cell mutation जल्दी खाली ताको infertile न करी normal fertility maintain करतुव then सेटा कोन हो से mutation का next generation को population कोन हो ट्रांसफर हो mainly germ cell रे कोन हो mainly recombination हो जितने हमरो तो बड़ा genes मान का कोन ना recombination हुए तो fertilization हुए father और mother मान को ये भी recombination है ना ये टाइप रो तो सेडी कोन ना ताको म्यूटेशन भी कोन जर्म सेल के बीच में म्यूटेशन होला केतोडा के डिजीज अछि ताको जर्म सेल मोजाइकिज्म कोनती एरा कोन से माने मेंटलियन डिसऑर्डर जेटा हम पढितिले जे फिल्टर्स ये सेटा क्रोमोसोम थिला सिकल सेल एनीमिया समावना मेंडलियन को फॉलो करंती माने बापा मां पाखरे से डिजीज होता है बट तम जर्म सेल रे म्यूटेशन जगो से डिजीज तो छुआ मान को पळे आसी तो सेही कथा कहले जे सोमैटिक सेल हे पारे म्यूटेशन बा जर्म सेल म्यूटेशन हे पारे जाफल कि से ट्रेट टा कोन ना नेक्स्ट पॉपुलेशन को ट्रांसफर हे पारे तो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट by allele at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01 so allelic frequency allelic sequence variation so এটা important gote allelic sequence variation described as DNA polymorphism if more than one variant of allele at a locus appear in human population with frequency greater than 0.01 तो allelic variation तो allelic variation टा कोन तुमको allelic केमती variation हबो allelic तो गोटे जीन दुटा allele थे तार केमती variation हबो तमे जदि मन पयो कोन ना एबी ब्लड ग्रुपिंग कोन होता है हम ब्लड ग्रुप जो जीन टा कंट्रोल करे तार तीनटा एलील होता है तो आईए आईबी आई होता है बट नॉर्मल आई है तो सेते कोन ना गोटे इंडिविजुअल सिना गोटे इंडिविजुअल गोटे जीन दीटा ही एलील रहबो बट जो तीनटा एलील रही सेटा कोथि रे हो ना सेटा पॉपुलेशन लेखा लास्ट चैप्टर में पढी दिली चैप्टर क्रोमोसोम इनहेरिटेंस चैप्टर क्रोमोसोम विशेषण इनहेरिटेंस सेटर में पढी दिली कोन ना एलील रे कोन ना देखाय नॉर्मली गोटे इंडिविजुअल दीटा एलील ते गोटे जीन रे बट तीनटा एलील जो थाए सेटा कोन गोटे पॉपुलेशन में शो करे आ यदि तार फ्रीक्वेंसी 0.01 रो अधिक थिवो तने सेटा को निया जिवो एलीलिक वेरिएशन से एलील को
manage it better than 0.01 thibo. In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred as DNA polymorphism. तो आम जो एते देखले somatic cell mutation, germ cell mutation, ताको पुणी next population को जीवा पुणी allelic mutation. At least कौन कहला ना in simple terms, if an inheritable mutation is observed in a frequency in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. तो कौन कहला DNA polymorphism तो inheritable mutation next population जाकर तब कहा जाए ना DNA polymorphism कहा जाए. The probability of such variation to be observed in a non-coding DNA sequence would be higher as mutations in the sequence may not have any immediate effect or impact in an individual's reproductive ability. तो कौन करेगा ये जगह probability का chances हो जाए कौन भाई कहीं जो non-coding sequence यदि जहाँ भी mutation है तार तुम चाहे ना protein बनो इंस्टेड ऑफ non-coding तो सेटा से immediate effect by impact देखा जी वो नहीं individual reproductive ability বা कोई morphological characteristics ଉପରେ but these mutations keep on accumulating generation after generation form one of the basis of variability or polymorphism. but এই mutation টা কোন না generation after generation में कोन ना accumulate ही चले अपन होता है ना basis of variability বা polymorphism को establish करे. There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to very large scale changes. Then single nucleotide change in the SNP very large scale of polymorphisms over. For evolution and speciation, such polymorphisms play a very important role. You will study this in details and classes. The evolution, speciation, polymorphism very important role. Evolution evolution continuous variation by mutation. Evolution polymorphism play a very important role in evolution and speciation. The technique of DNA fingerprinting was originally developed by Alex Jeffrey. DNA fingerprinting developed by Alex Jeffrey. He used a satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. It is called variable number of tandem repeats (VNTR). This technique is used earlier involved southern blot hybridization using radio labeled VNTR as a probe. ताने कौन थिला ना DNA sequencing जो हला एटी जो DNA sequencing DNA fingerprinting जो टेक्निक के देइतले ना एलेक्स जेफ्री देइतले DNA fingerprinting टेक्निक असे से कौन देइतले ना से सैटेलाइट DNA प्रोब को यूज करतले जेटा कि वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करे very high degree of polymorphism show करे तब कौन करे ना VNTR करा तब variable number of tandem repeats VNTR full form तब जाको कौन करे द टेक्निक कौन करे ना southern blot hybridization कराला using radio level VNTR as a probe. then एटी कौन देछि एटी छोटा एटी तब एटी कौन देछि ना छोटा हमर स्टेप देछि बट सेटा एक्जेक्टली 6 रो अधिक स्टेप बट सेटा को हम तुमको एक्सप्लेन कर देबी वन बाय वन. तो फर्स्ट करना आइसोलेशन ऑफ डीएनए तन डीएनए को करे हमें आइसोलेशन करिया तब कौन करना डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देके ताको डीएनए को डाइजेस्ट करबा जेमते के VNTR और नॉन VNTR तन हम कोन करे जाउछे ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करे जाउछे ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो गोटे फोरेंसिक केस से करिया ना फोरेंसिक केस से कला माने एडी तरह जो गोटे सस्पेक्ट अछंती तब एटी गोटे क्राइम सीन नाम गोटे टिश्यू या गोटे हेयर फॉलिकल कुछ तो गोटे सेल मिलला तो से सेलटा एदिटा सस्पेक्ट रो कहार केडे जाने पे कोन करिया हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करिया जेरा सस्पेक्ट भीतर तो से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सस्पेक्ट रे केमिति करिया फर्स्ट ए जो क्राइम सीन रे जो मिलला हमको कोन कहंती जो टिश्यू या ब्लड सैंपल या किछि भी मिलला सेते कोन करिया फर्स्ट डीएनए को आइसोलेट करबा तापर केमिति करिया ताको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे कोन करना ताको डाइजेशन करबा जेटा VNTR या नॉन VNTR को हमें सेपरेट ही जो तापर कोन करिया ना ताको कोन करिया ना इलेक्ट्रोफोरेसिस करबा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस को इलेक्ट्रोफोरेसिस अगरस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एटा तुम आगुरो बोझे पडिबो आगो बोले जे अगरस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेटा को एजी को जाय आ कोन कजे ना पेज ना भी तुम सुनिबो जे अगरस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ताको कोन कजे ना सेमन को सेपरेट केमति करंती ना तमे एडी आगो पडियो ना डिपेंडिंग ऑन द जो हमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे कोन गला हम ढेर उडा डीएनए सीक्वेंस एमति पर डीएनए साइज एमति सेपरेट हेला एंडोन्यूक्लियस ऑफ डीएनए को काटिला तो सेटा कोन करे सेमान को
सेपरेशन केमती करबा ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे धरा तो डीएनए तो होचे हमर नेगेटिवली चार्ज एठी गोटे पॉजिटिवली चार्ज थिबो ताने डीएनए माने कोन ना एमती एमती हेकी सब कोन ना लाइन ही जिवो जते अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बा पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस करा जिवो केमती ना डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज एंड साइज ना सेपरेशन केमती बे ना चार्ज और साइज को नेकी माने मैं उल्टा करथिली डायग्राम टा उल्टा कर दिया डायग्राम टा माने जेडा सबटू स्मॉल थे समय कोन पॉजिटिव आड़ को बेसी दियो लार्ज गुडा पॉजिटिव आड़ को बेसी जाई परिबेनी तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड चार्ज को नेकी अगर जे इलेक्ट्रोफोरेसिस बा पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस हबो तापरे कोन हबो ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग मा ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन such as nylon or nitrocellulose nylon or nitrocellulose तर फास्ट कोन करिया ना आमे जे ट्रांसफर ना ब्लॉटिंग करबा अगर से आउट सीक्वेंस कोन हबो ना हमें डीएनए को डीनेचर करिया डीएनए को डीनेचर करे कोन करिया ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए करबा अल्काइल मीडियम रे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीएनए डबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए करबा तापर सिना जाय कि हम कोन कर परिबा ना हाइब्रिडाइजेशन कर परिबा सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड को हम हाइब्रिडाइजेशन कर परिबा एठी जो पर जो हाइब्रिडाइजेशन कथा देखला तत्र हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट करिया सेतर जाय कि ताको हाइब्रिडेशन करा जिवो तापर कोन करबा ना ताको कोन करबा ट्रांसफर करिया कोठी कि ना सेपरेट गोटे सिंथेटिक मेम्ब्रेन रे जेटा को नाइट्रोसेलुलोज बा नाइलॉन मेम्ब्रेन ट्रांसफर करिया आ जो कोन कहे ताको कोन कहे ना सदर्न ब्लॉटिंग कहे सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहे ताको सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बोले कहे सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहे ट्रांसफर करिया ताको तापर ताको कोन करिया द हाइब्रिडाइजेशन करिया डीएनए को विथ प्रोब माने कोन with label BNTR probe माने probe होची गोटे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जेटा कि रेडियोएक्टिव था माने ता देर हमें रेडियोएक्टिव आगरो हमें पके के रखते रेडियोएक्टिव ऐड कर देते जो रेडियोएक्टिव का रेडियोएक्टिव हेवी नाइट्रोजन हमें यूज करते हैं गोटे रेडियोएक्टिव कंपाउंड यदि ऐड करे तो रेडियोएक्टिव यूज करके तब कौन करा जो तब परमिशन जो प्रोब टाको आ प्रोब टाको केमती करा जो ना कॉम्प्लीमेंटरी टू बीएनटीआर एडी तो मुतो कहथिल ना जे गोटे स्टेप छाडी सेटा कोन ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रे कन्वर्ट करे से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रे कोन करा जो नै बीएनटीआर प्रोब को ऐड करा जो बीएनटीआर प्रोब को कॉम्प्लीमेंटरी परमिशन करा जो आ ताको ऐड होबो तापरे कोन होबो तापरे कोन जो तापरे डिटेक्शन तो करे ताको कोन करे जो हमें प्रोब कुछ ना पके दे ताको कोन करे ताको वाश ऑफ एक्स्ट्रा जो प्रोब जो रहे ताको वाश ऑफ कर देबा तापरे कोन करे तब एक्सरे फिल्म रे ताको प्लेस करबा एक्सरे फिल्म रे प्लेस करे काम पय मैं ऑटो रेडियोग्राफी पय तापरे कोन ना डार्क बैंड्स देखा जो सही ऑटो रेडियोग्राफी तो सेडी कोन करे डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शोन इन फिगर 5.16 तो सेडी कराला जो पेडनर कम मेटेरियल कम ताको अलगा कराला तापरे एठी अलगा करके एठी देखाला क्राइम सीन जो तीनटा जो क्रमशः मिलला एठी फर्स्ट एठी या संगर कोटा मैच होची या संगर बीएससी संगर एठी बीटा मैच चला तको क्रॉप को ने काम करले एक्स ऑटो रेडियोग्राफी करके कलर अलगा अलगा कलर पैटर्न सब दबो बैंड सब दबो सेडू जणा पड़िबो एठी ताने हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रा सीक्वेंस कोन थिला ना फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट आइसोलेट डीएनए को आइसोलेट कर देबा तापर तको एंडोन्यूक्लियस থেকে डाइजेस्ट करे छोटे छोटे फ्रैगमेंट कन्वर्ट करबा तापर तको सेपरेट करबा इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज तापर कोन करे आउट तापर कोन सीक्वेंस ना एठी गोटे मजर सीक्वेंस कोन रहबा ना ताको डीएनए कोन करे डीनेचर करे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए करबा तापर कोन हो ना सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कोन करे डीएनए को गोटे सिंथेटिक मेम्ब्रेन रे ट्रांसफर करे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन सिंथेसिस करे तापर कोन हो ना बीएनटीआर प्रोब नि कोन करे जो हाइब्रिडाइजेशन करे गोटे रेडियोएक्टिव प्रोब को ने के से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए संगे कोन करा जो ना कॉम्प्लीमेंटरी जो दी जण एक दूसरे को सेटा कोन करा जो ताको हाइब्रिडाइज करा जो तापर कोन जो से डीएनए फ्रैगमेंट कोन करा जो ना ऑटो रेडियोग्राफी करके डिटेक्ट करा जो द बीएनटीआर बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रिफर्ड टू एज मिनी सैटेलाइट बीएनटीआर कोन कहा जाय ना बीएनटीआर कोन कहा जाय ना मिनी सैटेलाइट कहा जाय द स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज arranged randomly in many copy numbers the copy number varies from chromosome to chromosome in an individual the number of repeats of vary degree of polymorphism as a result BNTR varies from size 0.1 to 20 kilo bases माने 20,000 bases consequently after hybridization with BNTR probe the autoradiograph gives many bands of different size these bands give a characteristic pattern for an individual DNA so band ta kon ଗୋଟେ characteristic pattern ଦଉଥିଲା ଗୋଟେ for individual DNA it differs from the individual to individual in a population except in case of monozygotic identical twin तो individual to individual population rate सबବେଳେ
difference थाए except monozygotic by identical twins. The sensitivity of technique has been increased by use of polymerase chain reaction. Sensitivity increase करके ना polymerase chain reaction का जी PCR जापर के हमें कौन ना कोटे DNA को constituted DNA from a single cell is enough to perform cell ना DNA fingerprint analysis. अगर हमें PCR दे के हमें artificially कोटे DNA को ढेर उड़ा copies formation कर परिवा तो से नहीं कोटे single cell को DNA fingerprint analysis करे easy. In addition to application in forensic sciences, it has much wider applications such as determining population and genetic diversity. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprints. तो एठी गोटे इंटरेस्टिंग कथा मु तुमको कहବାକୁ जाउची तमे जानिछ हमर नॉर्मल फिंगरप्रिंट जोटा कि हम फिंगर आंगुली रे जो अछि नॉर्मल फिंगरप्रिंट कोन ना तमे माने जानिछ सेटा डिटेक्टिव सो तमे देखतियो सेटा कोन ताय ना समाने फिंगरप्रिंट केतो सब गोटे पाउडर पगे द फिंगरप्रिंट कोन करे समाने उठे के आनिबे ताको सेव करके रखबे तो सेटा कोन ना फिंगरप्रिंट तम मन रखछो जानिछो जे सब इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट ता समान बट इंटरेस्टिंग कथा कोन ना एटी तुम जेंते देखिलो जे एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन बाकी सब इंडिविजुअल डिफरेंट करे कोन ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ता मोनोजाइगोटिक ट्विन को छाड़ के बाकी समस्त डिफरेंट करे माने मोनोजाइगोटिक ट्विन द डीएनए सीक्वेंसिंग पूरा सेम बट मोनोजाइगोटिक ट्विन द नॉर्मल फिंगरप्रिंट कोन ना अलग तमे सिने को मोनोजाइगोटिक ट्विन रो डीएनए सीक्वेंस पूरा सेम हिथिबो और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग करी होबनी बट ताकर जो फिंगरप्रिंट ता नॉर्मल आंगुली रे अछि सेटा होची अलग थाए फिंगरप्रिंट ता दुनिया रे सब लोकंकर अलग एंती मोनोजाइगोटिक ट्विन रे भी आइडेंटिकल ट्विन रे भी अलग तो सेज पे कहया जे फिंगरप्रिंटिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग बेसी रिलायबल दैट हम थर्ड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तार समरी रे भी बेसी किछि इंपोर्टेंट नाही नॉर्मल का सब लिखिछि जहा लिखा कथा एगो तुम पढि देबो तरे याको एबे हम डिस्कस करबा एबे हम डिस्कस करबा exercise group the following is nitrogenous bases and nucleosides the nitrogenous bases which adenine thymine uracil cytosine and nucleosides के रहेला ताने cytidine और guanosine हो जो nucleosides बाकी सब कौन nitrogenous bases ताबले कौन if a double stranded DNA has 20% of cytosine calculate the percent of adenine in the DNA देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रे कोन चार गैप फुल को जदी हमें नै कि जीवा सबले A इक्वल टू T होबो G इक्वल टू C होबो A इक्वल टू T होबो G इक्वल टू C होबो एडेनिन सबले माने प्यूरिन सबले पिरिमिडिन ताकर सेम नंबर रहबो प्यूरिन प्लस पिरिमिडिन सबले 100% हेबे तो एडी कोन देखले ना 20% साइटोसिन अछि 20% साइटोसिन अछि माने 20% गुआनोसिन भी थिबो माने 20% गुआनाइन भी थिबो तो गुआनोसिन बोली 20% गुआनाइन भी थिबो ताने 20 गुआनाइन हे गले बाकी केते रहला बाकी रहला हमर केते 80% बाकी केते रहला हमर 80% रहला ताने ना माने 20% साइटोसिन और 20% गुआनाइन हे गले 20 केते रहला 40% रहला 40% चली गले बाकी केते रहले A और T मिसी केते रहबे ना 60% रहले 100% टू 60% A और T रहबे ताने A और T रो कोन हबो ना A + T पेन चेंज करे A + T जदी 60 हेले काहे ना C अछि 20 G होबो केते होबो 20 ताने टोटल हेले केते 40 ताने A T होबो 60 ताने A केते होबो 30 ताने एडेनिन केते अछि ना 30% एडेनिन अछि if the sequence of one strand of DNA is written as empty the right angle sequence of complementary strand in 5 days तमे एटा 5 days तमे एटा लिखि परिबा एटा मु किछ कहया दरकार नै तमे एटा आराम से निजे लिखि परिबो ए जगह रे कोन को जे डीएनए रेडा ताने ए जगह रे T लगो ए जगह रे T लगो T जगह रे A लगो C जगह रे G लगो G जगह रे C लगो एमती करके हे परिबो तापर सेटा भी नेक्स्ट कथा भी सीक्वेंस ऑफ mRNA सीक्वेंस ऑफ mRNA को सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड दीची माने एमिति दीची कोडिंग स्ट्रैंड कोन गुडी तला टेम्पलेट स्ट्रैंड गुडी तला कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड को नेके डीएनए ना आरएनए रेप्लिकेशन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होतला तो कोडिंग स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड एग्जैक्टली एज आरएनए तला बस टी जगह रे यू तला तो एटी कोन करियो जे एटी जति सब टी दीची टी जगह रे कोन करियो ना यू लिखि देबो आ एमटी पर डायरेक्ट रख दो हे गेला mRNA सीक्वेंस नंबर हे गेला and at this corner coding strand बोली कहि then which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesis as semi conservative mode of DNA replication explained and DNA double helix को property ता माने कोन गला ना ताको कहला जे DNA ता DNA replication ता semi conservative इन तो Watson and Crick कोन कहले DNA strand कोन ना anti parallel complementary to each other तो सेही जो anti parallel complementary to each other कहले और सेटा कोन ना डीएनए तो निहाती गोटे सेल रो आउटर सेल को जीवो
तो जो कॉम्प्लीमेंटारिटी और एंटी पैरेलल नेचर सेटा तमन कोन देला ना तांको आइडिया देला जे डीएनए रेप्लिकेशन टा कोन थिबो ना सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर हे कोन तो आइडिया ना एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंटारिटी टा कोन देला ना समान को हाइपोथेसिस परमिसिबल सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन थिबो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट डीएनए और आरएनए और द नेचर ऑफ न्यूक्लिक acid synthesis for RNA is the type of nucleic acid polymerase ताने लेकिन डीएनए और आरएनए को नेकी तारा केते टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज हे पारि ताने फास्ट जति हम कहबा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेले हमर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जति रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन थिबो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होतबो ताने आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वायरस माने आरएनए वायरस माने तमारे तो नुआ नुआ वायरस को जो सेटा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थिबो तो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस करे अपन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट यूज करे बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट यूज करके आरएनए को सिंथेसिस करे से बड़ा बाकी तीन टाइप भी सेमते हे परिबो तो यदि हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नबा तो चारटा हबो डीएनए डिपेंडेंट ए क्वेश्चन रो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज How does Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while proving that their DNA is genetic material? First से कौन करते ना गोटे रेडियोएक्टिव फास्फोरस नहीं थिला और रेडियोएक्टिव सल्फर नहीं थिले रेडियोएक्टिव फास्फोरस टा कौन थिला ना रेडियोएक्टिव डीएनए थिला और रेडियोएक्टिव सल्फर टा रेडियोएक्टिव प्रोटीन थिला तो जता से सेंट्रीफ्यूज कले तो बैक्टीरियोफेज की जेतिले बैक्टीरियोफेज टा कौन ना किछोटा जेनेटिक मटेरियल ता सेल भीतर इकोलायर सेल भीतर पठेबो तो देखले जे जता सेंट्रीफ्यूज कले यदि इकोलाई टा रेडियोएक्टिव रहिला त सेटा कोन थिबो ना डीएनए थिला सेटा रेडियोएक्टिव फास्फोरस मिलला माने सेटा कोन थिला डीएनए थिला आ जदी बाहर जदी रहिला बाहर जदी रेडियोएक्टिविटी रहिला त सेटा कोन थिला रेडियोएक्टिव सल्फर थिला माने सेटा कोन थिला ना प्रोटीन थिला तो सेटा को नहीं कोन हला से माने जो सेंट्रीफ्यूज करी जना पले सेंट्रीफ्यूज करके वेट सेंट्रीफ्यूज डेंसिटी को नहीं तो सेंट्रीफ्यूज मेथड जना पड़ला से कोडा भितु जाय तो कोडा भितु जाय सेडी जाना पला जे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल तो जे टाइप इकोलाई भितु मिलियो सेटा कोन कहले सेटा तला जेनेटिक मटेरियल द डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव डीएनए कोन ला स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स को सेवरल टाइम रखतांती सैटेलाइट कोन ना सैटेलाइट डीएनए टा होजु गोटे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जेटा कि हाईली रिपीटेटिव डीएनए कंट्रोल करते रिपीटेटिव डीएनए माने कोन ना गोटे डीएनए सीक्वेंस जेटा कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस को ढेर टाइम पे माने ढेर नंबर सेवरल टाइम्स पे रखते हैं आउ सेटा जो हाई नंबर रहेला त कोन कहल ना सैटेलाइट डीएनए कहला त रिपीटेड डीएनए कोन तकर लेंथ रे वेरी करंती सेवरल बेस पे 100,000 हम सेट पर लाइन लिखा हिची और सैटेलाइट डीएनए कोन त सैटेलाइट डीएनए छोटा थाई शॉर्ट इन लेंथ है और ओनली 100 पे लॉन्ग तो सैटेलाइट डीएनए ता कोन त ना छोटा था रिपीटेड डीएनए था ना बहुत लंबा था और कोन ना रिपीटेड डीएनए को जो ना बल्क डीएनए रो सेग्रीगेट करा जो सेपरेट करी हो यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन काइने से माने लाइट बैंड रे अपीयर होती तो सैटेलाइट डीएनए केमती कि हो तो से माने भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन रो रे सेपरेट हेबे काइने ना समय डार्क बैंड और स्मॉल पीक्स से अपीयर होती तो एटा थले रिपीटेड डीएनए सैटेलाइट डीएनए एमआरएनए और टीआरएनए एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए जो टेम्पलेट थाई ट्रांसक्रिप्शन पे टीआरएनए थाई कोन ना एडेप्टर मॉलिक्यूल जेटा कि अमीनो एसिड को कैरी करिया रे हेल्प करे एमआरएनए कोन गोटे लीनियर मॉलिक्यूल टीआरएनए कोन ना क्लोवर लीफ शेप बा इन्वर्टेड एल शेप तबरे एमआरएनए कोन ना राइबोसोम से अटैच हिता टीआरएनए कोन ना राइबोसोम से गोटे एंड अटैच हुए आउट एंड रे कोन ना एमिनो एसिड से अटैच हिता और एमआरएनए कोन एमआरएनए टा होची बेसी बल्की टीआरएनए टा होची सबटू हल्का और सबटू सॉल्युबल आरएनए होची टीआरएनए ताबे कोन टेम्परेचर पॉडिंग टेम्परेचर कोन ना गोटे सर्व इज टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन पॉडिंग स्टेज इज कॉम्प्लीमेंटरी टू टेम्परेचर तापरे टेम्परेचर कोन ना कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू एमआरएनए आउ कोडिंग स्टैंड होची same as the transcripted mRNA just timing जगह uracil थिबो और टेम्परेचर स्टैंड कोन ना 3 days to 5 days डायरेक्शन रे कोडिंग स्टैंड 5 days to 3 days डायरेक्शन रे leads to essential roles of ribosome during translation first the ribosome कोन ना site of synthesis of protein ribosome is the factory of protein synthesis तार दिटा सब यूनिट ते लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट
स्मॉल सब यूनिट कौन करे ना इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन करे, लार्ज सब यूनिट कौन करता है ना एमिनो एसिड पे बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, आ कौन था ना लार्ज सब यूनिट कौन था ना टीआरएनए को अटैचमेंट पे हेल्प करे आ सेते ढेर गुडा को आरएनए ता 23s आरएनए जेटा कि एक्ट एज राइबोसोम, एटा गोटे राइबोसोमल एंजाइम भाबे काम करे, तो एटा थला राइबोसोम रो फंक्शन। In the medium of where E. coli was growing, lactose was added, which induced lack of protein. Then why does the lack of protein shut down sometime after the addition of lactose in the medium? अरे ଯେତେବେଳେ lactose ଦେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା start ହେଲା, but lactose digestion ଟା କଣ ହବ, lack of protein କଣ ହବ ନା lactose digestion ପରେ କାରଣ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ lactose ଟା କଣ ଥିଲା ନା induce ଥିଲା, inducer ଟା ଯେଟା repressor ସାଙ୍ଗରେ joint ହେଇକି लैक ऑफ प्रिंट को ओपन करी रखला, तो इंड्यूसर क्वांटिटी कम कमी करे लैक ऑफ प्रिंट जो, तो कौन हो ना इंड्यूसर सप्रेसर को बाइंड कर रख पाएबनी, तो धीरे धीरे कौन करे ना सप्रेसर जाई कौन करिवु ना ऑपरेटर रीजन में जाई बाइंड कर जे अपन लैक ऑफ प्रिंट बंद हिजो, तो लैक ऑफ प्रिंट बंद होबार रीजन टा कौन ना डिक्रीज इन इंड्यूसर मॉलिक्यूल दैट इज लैक्टोज। एक्सप्लेन इन वन और टू लाइन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। प्रोमोटर कौन थे ना सेक्शन ऑफ डीएनए जेटा कि इनिशिएशन करे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, अब बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करे आरएनए पॉलीमरेज को। टीआरएनए कौन, टीआरएनए होची गोटे स्मॉल आरएनए डबल लीफ साइड बा इन्वर्टेड शेप आरएनए जेटा कि एमआरएनए को ना जेटा कि एमिनो एसिड को ट्रांसफर करे, जेटा गोटे एडाप्टर मॉलिक्यूल भाबे काम करे। एक्सन्स कौन जेटा होची कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए को एक्सन्स कहती, सेटा ही हमर सब एमआरएनए रो मेन टा था जो प्रोटीन कोड करे। व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, काहे सेटा 13 वर्ष जाई चलतला, $9 billion खर्च होता, सेटा सब बेस पेयर 1 by 1 कैलकुलेट हेतला, ढेर गुडा कंट्री से इन्वॉल्व हेतले, और सेटा हमर मेडिकल क्षेत्र रे और मेडिकल फील्ड रे एग्रीकल्चर फील्ड ढेर गुडा फील्ड रे हम मतलब ढेर गुडा स्ट्रीम और न्यू एरियाज ऑफ पॉसिबिलिटीज न्यू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कवर करतला। तब व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंट मेंशन इट्स एप्लीकेशन, तो आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग variation in different individual at DNA level को कहते हैं DNA fingerprinting कहते हैं, तो एप्लीकेशन कोड ना क्राइम्स इन द सस्पेक्ट को द्वारा पके पे फोरेंसिक साइंस रे, तारे पैटर्निटी टेस्ट रे, तारे आइडेंटिफाइंग एंड प्रिजर्विंग द कमर्शियल वैराइटीज ऑफ लाइवस्टॉक एंड क्रॉप्स, तारे मोर अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विषय जाने पई, तो सेटा पई कोने DNA fingerprinting रे यूज। ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कोन ना आरएनए जो डीएनए टू फॉर्मेशन वाला ट्रांसक्रिप्शन को जाए, तर तीनटा स्टेज थाए, तरा कोन इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन, एटा हो ट्रांसक्रिप्शन। तब तुम एते ट्रांसक्रिप्शन मु कहले कोन तुम ट्रांसक्रिप्शन पढी देबो, आ कोन ना पॉलीमॉर्फिज्म में डीएनए जो रिपीटेड सीक्वेंस जो गोटे गोटे बेस पेयर जो डिफरेंसेस शो करे, वेरिएशन शो करे, तो 0.1% डीएनए सीक्वेंस, एटा कोन कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को जाए। तब कोन ना ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कोन ना प्रोटीन फॉर्मेशन हो बाबू आरएनए एमआरएनए रो प्रोटीन फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन पड़े, ता विषय भी तबे पढ़ देबा ट्रांसलेशन कोन, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोन ना न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी दैट एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट हेल्प इन होतरे ना डाटा बा सीक्वेंसिंग करिया, कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज करे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ एल्गोरिथम यूज करे के बायोलॉजिकल डाटा को प्रिजर्व करिया कोन करले ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहला। तो एही भली भाबे हमर फिनिश वाला कोन चैप्टर ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर करते, मोला एटा सब बड़ा चैप्टर थिला, और सेतरे एते सब बड़ा क्वेश्चन आसे, तो बोर्ड एग्जाम में ढेर क्वेश्चन आसे एतरो, और नीट एग्जाम में तो 5 टू 6टा क्वेश्चन मिनिमम आसे चैप्टर रो। तो चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर को पढि देबो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर बड़ा पढिबो। एटा ओडी 5 मेरा फिफ्थ सेशन टा लास्ट सेशन ला 5 सेशन टा बाकी सब वीडियो गुडा को देखि देबो, ए चैप्टर बोल से एक्सप्लेन करि सब गुडा को। ठीक अछि, गुड बाय, थैंक यू।